Ladies and gentlemen, good day and welcome to the GR Infraprojects Limited 4Q FY22 results conference call hosted by HDFC Securities. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to you, Mr. Parikshit D. Kanpal from HDFC Securities. Thank you. Hi. Over to you, sir. Hi, thanks. I would like to thank the management of GR Infra for giving this opportunity to host the FY22 earnings call. Without further delay, I would like to hand over the floor to Ajinder Agarwal ji for his opening remark. Over to you, sir. Thank you. थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। आप सभी का वार्म वेलकम है। आज हम 31 मार्च को कंप्लीटेड जीआर इंफ्रा के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जीआर इंफ्रा लिमिटेड की तरफ से बात करने के लिए मेरे साथ में श्री आनंद जी राठी भी मेरे साथ में है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस सभी में आप सब लोग एक बार फिर मेरे साथ में हैं। प्रीवियस कॉल में इस गवर्नमेंट के इंफ्रा फोकस पर अपन बात कर चुके हैं, जो कि अपने बजट इन्वेस्टमेंट में भी क्लियर तरीके से दिख रहा है। गवर्नमेंट का इंफ्रा फोकस एनआईपी से भी काफी कुछ क्लियर हुआ है। तो गवर्नमेंट का इंफ्रा विजन इंप्लीमेंट करने के लिए सभी फ्रंट पर काम करते हुए देखा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए को मॉनिटर करने के लिए पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म काफी अच्छा टूल साबित हो रहा है। इंफ्रा को डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्टेट का शेयर भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एनएमपी की सक्सेस के लिए बीओटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो पीरियड पहले 2 साल था उसको कम करके 1 साल किया गया है। भारतमाला फेज फर्स्ट में बैलेंस 14,000 किलोमीटर को अवार्ड करने का लक्ष्य अगले 2 साल में रखा गया है तथा करंट फाइनेंशियल ईयर में 18,000 किलोमीटर रोड बनाने का भी टारगेट किया गया है, जो कि पर डे अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर के करीब आता है। रेलवे के फ्यूचर डिमांड को भी कैटर करने के लिए तथा रेलवे में फ्रेट को जो का शेयर है उसको बढ़ाने के लिए एनआरपी 2030 का प्लान रोल आउट किया गया है। पावर सेक्टर में भी एनएमपी का हिस्सा बनाकर उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के पीरियड को 2 साल से कम करके 1 साल किया गया है। बिजनेस को और स्मूथ बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की प्री कंडीशन में भी वेव की गई है। इंफ्रा में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कमोडिटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी में भी ट्विकिंग की गई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। इंटरनेशनल फ्रंट पर भी अपन देखते हैं कि कंट्री के अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अनुकूल एनवायरनमेंट बनाया गया है और क्वाड नेशंस की अभी जो मीटिंग हुई उसमें भी इंडो पैसिफिक रीजन में करीब $50 बिलियन का असिस्टेंस प्रपोज किया गया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्यूचर लग रहा है। अब मैं आता हूं कंपनी के अपडेट्स पे। फाइनेंशियल ईयर 2022 Q4 में कंपनी को 7 प्रोजेक्ट्स में L1 डिक्लेयर किया गया है, जिसकी ऑर्डर वैल्यू करीब 7,138 करोड़ रुपीज है। ड्यूरिंग 22 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रोड, पावर ट्रांसमिशन और रेलवेज में करीब 19 बिड्स किए, जिनकी प्रोजेक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 96,000 करोड़ थी। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी को 11 प्रोजेक्ट्स टोटल अवार्ड हुए, जिनकी कंबाइंड ऑर्डर वैल्यू 9,970 करोड़ है और इन 11 प्रोजेक्ट्स में 8 हैम के प्रोजेक्ट्स हैं, 2 मेट्रो के हैं और 1 पावर ट्रांसमिशन का है। 31 मार्च 22 तक कंपनी की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20,211 करोड़ रुपए है। इसमें कंपनी को L1 डिक्लेयर किए गए भी प्रोजेक्ट की वैल्यू भी शामिल है। पिछले
5 वर्षों में कंपनी ने मैन पावर, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स और ऑर्डर बुक कंपोजिशन में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट किया गया है। आज की तारीख में कंपनी के पास एक बीओटी ऑपरेशनल एन्युटी प्रोजेक्ट है और 22 हैम प्रोजेक्ट्स हैं और एक पावर ट्रांसमिशन बीओटी प्रोजेक्ट्स है। इन 22 हैम प्रोजेक्ट्स में से 7 ऑपरेशनल है, 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 8 प्रोजेक्ट्स की अपॉइंटेड डेट अभी अवेटेड है। कंपनी का वर्तमान में जो फोकस है वो हैम प्रोजेक्ट्स की कम्पिटिटिव बिडिंग के साथ में ईपीसी प्रोजेक्ट में भी अपनी पोजीशन बनाए रखना है। और इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी ने 2 हैम के प्रोजेक्ट्स और 7 ईपीसी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। कंपनी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज करने के लिए और री इन्वेस्ट करने के लिए और कंपनी की जो कैपिटल है उसको फ्री करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट को सेटअप करने पर काम कर रही है। कंपनी ने रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के अनुसार इनविट के इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए जीआर हाईवे इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, जबकि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करेगी। बोर्ड को भी स्ट्रेंथन करने के लिए और हमारी कैपेबिलिटी को बनाए रखने के लिए बोर्ड ने एक नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर श्री राजन मल्होत्रा को अपॉइंट किया है और श्री मल्होत्रा जी की जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में 42 इयर्स का एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है। हम ऑर्डर बुक में भी प्रोग्रेस को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रूडेंट बिडिंग स्ट्रेटेजी को बनाए रखेंगे और रोड, रेलवेज, मेट्रो और ट्रांसमिशन सेक्टर में सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करते रहेंगे। थैंक यू। अब मैं आनंद जी को हैंडओवर करता हूँ। फाइनेंशियल के बारे में आपको आनंद जी बताएंगे। Thank you, sir. Thank you. Good afternoon to all. Myself Anand Rathi. So let me share the financial highlights for the quarter or year ending March 31st, 2022. So our company's standalone revenue from operation increased by 675 crore with a growth of around 9%, from rupees 7,244 crore in a year ended March 21 to 7,919 crore in the year March 2022. On consolidated basis, revenue has increased by 614 crore with a growth of around 8% from 7,844 crore to 8,458 crore as of March 2022. A standalone EBITDA margin has also been recorded at 1,413 crore with a decrease of around 25 crore from the previous year of rupees 1,438 crore. Our EBITDA margin at console level has also stood at around 1,802 crores versus 1,920 crores that was recorded in the previous year, that is March 2021. PAT, profit after tax, has also come down to 760 crores as of March 2022 as compared to 780 crore which was recorded in March 2021. And PAT at console level has also decreased and come down to 832 crores, I would say 832 crores as compared to 955 crore in the previous year, March 2021. This decrease was primarily due to net decrease in claim and bonus, which was recorded in the current year, and again decrease in operation activity of the company because of delay in declaration of appointed date and all. Our standalone net worth is stood at 4,364 crore at the end of financial year 2022. It was around 3,600 crore at the end of financial year 2021. Our net worth at console level is around 4,811 crore at the end of fiscal 2022, which was 3,981 crore at the end of financial 2021. Our total standalone borrowing outstanding at the end of March 22 is around 1,100 crores, which includes the short-term borrowing of 55 crore with debt to equity of 0.25 times. Our total consolidated borrowing as of March 2020 is 5,250 crores with debt to equity of 1.09 times.
During the year, company has made addition to the fixed asset amount to rupees 424 crores. A net block of property, plant and equipments, including CWIP, is the current work in progress. Capital work in progress is rupees 1,514 crore at the end of March 2022. Investment in our subsidiary companies in form of loans and equity is around 1,320 crores at the end of March 2022. At the end of last previous year, it was at 1,255 crores. So balance promoter contribution, this is the existing order book. Balance promoter contributions to be required to be made in next 3 financial years is around 2,100 crore, what we believe is to be evenly distributed in next 3 years. Our working capital days remains almost at the same, which is 72-73 days, which was the same as of March 21, and it remains same as March 22. Our trade receivables at the standalone basis is 716 crore at the end of fiscal 2022 as compared to 898 crores at the end of fiscal 2021. On consolidated basis also, our trade receivable stood at 664 as compared to 492 crores at the end of fiscal 2021. Our inventories are at around the level of 1,022 crore at the end of fiscal 2022 as compared to 1,058 crore, which was the figure at the end of fiscal 2021. Our cash and cash equivalent at the external basis is around 445 crore at the end of fiscal 2022 as compared to 542 crores at the end of fiscal 2021. The cash and cash equivalent at consolidated level is around 1,095 crore at the end of fiscal 2022 as compared to 831 crore at the end of fiscal 2021. Our mobilization advance outstanding at the end of fiscal 2022 is around 70 crore as compared to 257 crores approx at the end of fiscal 2021. And order book, as mentioned by Ajendra sir, at the end of March 22 is around 20,200 crores, which includes the L1 projects of around 1,200 crore at the end of March 2022. This is all about the financial highlights from my side. On behalf of GM Projects Limited, I'd like to thank everybody who's attending the call and happy to take any question on this side. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Our first question is from the line of Shravan Shah with Dolat Capital. Please go ahead. Thank you, sir. Sir, what's the revenue guidance and EBITDA margin expected in FY23? So revenue guidance for next financial year, what we believe is that most of the projects we have received the appointed date recently in last quarter itself, and even our order book is also replenished in last quarter. So we don't believe that we would be, my revenue growth would not be, I don't believe that as of now, because until we got some other EPC projects and going forward, then probably my revenue growth would be within the range of again 5 to 10% for the current year. And the EBITDA margin, what we believe is that so far we have, in last financial year, our the revenue mix was more inclined towards EPC projects. Most of the EPC projects we have executed, and HAM projects mix was lesser. I would say proportion of HAM was less. And going forward, as of now, my order book, remaining order book, it's a more of HAM projects, and EPC is very small. I would say it's just reverse, vice versa. So assuming that we'll be executing more HAM projects going forward in the current year, my margins should generally be increased, but again subject to execution, which is affected generally by either inflation or
or by monsoon, or by delay in declaration of appointed dates. But generally, it should, it should be improving. It should be on improving side. Any number improving? Shall we take it 15%, 16%? What number? It should be maybe in the range of 2 to 3%. But yeah, again, because inflation is the major concern going. I mean, right now as we speak, right? So that again depends on how inflation pans out, right? So government is working on that side. But yeah. So including bonus claim, everything was 16.1%. So which number are we referring? Would be so core. Even if we assume, let's say there is no bonus claims. So what would be the core construction EBITDA margin on the yearly basis in FY23? Will it be 15%, 16% that we are we looking at? So far, if we exclude the bonus and claims, all that, so my EBITDA margin would be in the range of 15%, right? For the current financial, I mean the previous financial year. Probably going forward, right, as will be executing more HAM projects, so this EBITDA margin should move up from that 15% to maybe 16 or 17. Okay, got it. Sir, some of the clarifications, sir, in terms of the order inflow. So this year in FY22, the order book that we are mentioning in the presentation, that is a 13,000 crore, so which excludes the L1 to Metro and the HAM 7 HAM. So in that, how much value of order inflow excluding GST we have booked in FY22? Out of that 13,000 crores? No. So simply in FY22, what was the value of order inflow excluding GST that we have booked? It's around 9,000. It's including GST, but I need to check. Yes, but so let me come back on this, right? Yeah, and the value that we are mentioning, Metro 1185 and the 5,900 crore for 7 HAM. These are the excluding excluding GST EPC value. It's EPC value, right? Okay, I think excluding. It's mentioned in the presentation itself, right? So in presentation we have mentioned it is a L1, but most of the project, I would say, we have already entered into agreement with the authority, right? And we have received the LOA. So except these two metro projects valuing around 1185 crores, right? All projects for all the projects, for the rest, all the projects we have received either we have entered into agreement or we have received the LOA. So this is L1 status, right? So out of 20,000 crore of order book, it is 1185 crore, which is L1, which is having L1 status. Otherwise, in all of the projects, we have received the LOA or agreements. They have already been signed. Okay, got it. So now this is all without GST, right? It's excluding GST. Yeah. So now the simple question is in terms of the two things. First, in terms of the order inflow, so how much now we are targeting to get in FY23. Also, the breakup of equity investment that we are saying that another 2,100 odd crore is required. Correct me if I am wrong. How much to be infused in FY23, 24? So that would be helpful. Yeah, so all HAM projects are to be executed in next 3 years. So what we have, I have mentioned in my commentary also that probably the 2,100 crore, what we believe should be distributed evenly in next 3 years. 700 crore for current year, 700 crore for next year, and so on, right? So that is the idea of equity commitment. Okay, and in terms of the order inflow for this year, how much we are targeting and how much from out of that in the HAM and the EPC? Generally, guidance from government side of HAM and EPC is 60-70% would be coming under HAM, and the balance 20-30% would be either under EPC or BOT. And what we believe is that we should always be following this kind of discipline. We should also be following the suit, and that's our belief that we will also be having whatever order we'll be bidding or whatever order we'll be getting,
getting, that would be 70% would be under HAM category, and the balance would be EPC. BOT, we are not that much comfortable, yeah, of course, and in terms of value, probably our target would be all in all maybe in the range of 15,000 crores for the year, and that would be comprising of both highway sector, railway, metro, as well as transmission. So if specifically about maybe in the range of 10 to 12,000 crores, and balance would be coming from other side. Okay, got it. And lastly, sir, on the capex front, how much are we looking at? And in terms of the standalone level debt, which is at 1,100 odd crores, so I'm excluding the mobilization advance in that part. So that number, how do we see that number? So that depends on the working capital days. So are we looking at any change in the working capital days for this year? No, I don't believe that there will be any change in working capital, first thing. And the second, standalone debt has reduced, right, from previous year it was, and including mobilization advance. Even if I include my mobilization advance, standalone debt is around 1,170 crores, right? So 70 crore is, I would say 70 crore is the mobilization advance outstanding as of March 2022. And if you talk about capex, probably what we believe is that if there is not, if we don't see any significant, different project will be getting in going forward, then my capex would be in the range of 200 to 300 crore for the current year. That's how we believe. Last on the number on the unbilled revenue and the HAM data. If you can help me with that, then it would be great. So unbilled revenue as of March 22 was in the range of around, I would say, 580 crore, which was largely of, work done in the month of March, which is yet to be billed, right? And that was the unbilled revenue. And when we talk about on console, I mean, because HAM debtors are, getting consolidated in my console position. So no, on the standalone, sir, I'm asking. So out of 716 crore debtors, how much would be the HAM debtors? It would be around 200 crore. Okay. Thank you and all the best, sir. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Mohit Kumar with DAM Capital. Please go ahead. Good afternoon, sir. And congratulations on a decent show given in the challenging environment. So my first question is, in this particular quarter, the EBITDA margin was very high. Is there any one-off? Is there any claims which you have booked in the quarter? Yeah. So there is around 80 crores, 82 crores, I would say. Specifically, 82 crore is kind of one-off, which we have received, we have recognized as the income. That is, either GST claim or other claims or bonuses. Understood, sir. And so, when do you expect the appointed dates for especially the HAM order which you won in the Q4? Can you expect this to by Q4 of FY23? There should be in place? Yeah, what we believe is that whatever HAM projects which right now we are having in our portfolio, where appointed date is awaited, what we believe is we will be having that appointed date in place in Q3 of this current financial year. Is it possible to lay out the status of land acquisition for some of them? Land acquisition is, this remains challenge. That is our experience so far. In fact, even No. So my question was, what is the status of land acquisition for all these 5-6 projects which have won in the Q4? So I would say, that number is not ready upfront with me, but yeah, this has been challenged. But what we believe is, this is our, evaluation of land acquisition or land status. Only we are telling you that probably most of the project will be having the appointed by the end of December 2022. Understood, sir. Lastly, sir, where are we in terms of monetization? Of course, we have formed the InvIT. Are we looking to do a public or private InvIT? And what is the kind of timeline you are looking at right now? Should the InvIT be in place by end of FY23?
Yeah. So our target is that we should be having InvIT in place by FY23 in the current year itself. And that public or private is, something that is to be, the call is to be taken at appropriate time. And investment management firm that has already been incorporated, that is GR Investment Management Highway. So that investment manager firm is already been established, right? And we have already applied to, and we have even approached to SEBI as well for registration of our trust. Understood. Thank you and all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Rishikesh Tendulkar with JM Financial. Please go ahead, sir. Hi, thanks for giving the opportunity, but my question was already answered in the first one, so I would like to ask. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Jiten Rushi with Axis Capital. Please go ahead. Okay. Hello. Mr. Rushi, you can proceed with your question. Hello. Mr. Jiten Rushi, your line has been unmuted. You can proceed with your question. Since there is no question from Mr. Jiten Rushi, we will proceed with the next question. And the next question is from the line of Ashish Shah with Centrum Broking. Please go ahead. Mr. Shah, you can proceed with your question. We will take the next question from the line of Alok Diora with Motilal Oswal Financial Services Limited. Please go ahead, sir. Am I audible? Yeah. So, sir, I just wanted to understand, if you could just again mention about what's the order inflow we are looking at for this year. So, considering that we are already on order book of nearly 20,000 crore, so what's the view and which sectors, majorly roads, and which other sectors we would be targeting for that? सर सेक्टर तो अपने लिए सबसे पहले तो हाईवे मेन सेक्टर है ही है, जो जिस तरह से गवर्नमेंट का जो टारगेट्स हैं 18,000 किलोमीटर के जो पेंडिंग है, तो उसमें अपना मेन जो 75 to 80% अगले आने वाले टाइम में अपने हाईवे सेक्टर ही रहेगा, चाहे वो हेम हो चाहे ईपीसी हो, और रिमेनिंग 15 to 20% अपन टारगेट करेंगे रेलवे में और पावर ट्रांसमिशन में, बाकी सभी में हम आने वाले टाइम में ये देखते हैं कि परसेंटेज अपन बढ़ाएंगे, बट अगले आने वाले जो ईयर्स है इनमें जैसे अभी क्या है, पावर ट्रांसमिशन के साथ में हम रोपवे भी देख रहे हैं, हालांकि वो एनएचए से कंडक्ट होगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो पावर ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो पोल डिजाइनिंग है वो उसी तरह का काम है। और इस तरह से इंफ्रा में जो जीआई इंफ्रा का जो फोकस जो है बिजनेस में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी वर्क हो उसमें रहेगा, चाहे अभी हम लोग कुछ हाइड्रो पावर में भी देख रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार हम वहाँ पे भी स्कोप देख रहे हैं, लेकिन मेन फोकस जो है
आने वाले टाइम में हाईवे ही रहेगा। श्योर सर। तो अभी सर FY23 में कितना ऑर्डर इनफ्लो टारगेट कर रहे हैं? इंफ्रा जो अभी ये देखिए करीब 15,000 का अपना टारगेट है। ओके। जिसमें अप्रोक्सीमेटली हम लोग टारगेट कर रहे हैं 10 से 12,000 हाईवे से हो और 3 से 5 दूसरे से हो। लेकिन ये जो मिक्स है ना, मतलब चाहे हाईवे हो दूसरे सेक्टर हो, ये आने वाली अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी और अपनी पोजीशनिंग पे डिपेंड करेगा। अभी जैसे देखिए हम हैम के सभी प्रोजेक्ट को टारगेट करते हैं, लेकिन ईपीसी में थोड़ी सी वैल्यू के चैलेंजेस रहता है कि 1000 करोड़ से नीचे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हम 1000 प्लस के टारगेट करते हैं। और बाकी सेक्टर में जैसे पावर में या रेलवे में या मेट्रो में, रोपवे में, वो सभी तरह के वैल्यू के प्रोजेक्ट्स को हम बिड करेंगे। श्योर श्योर। एंड सर ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसमें L1 है, ये एक्चुअली काफी टाइम से L1 है अभी, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑन दैट अभी? बिकॉज अभी ये तो लाइक यू नो ऑर्डर बुक में है बट इट्स लाइक चालू नहीं हुआ काफी टाइम से, तो व्हाट इज द स्टेटस लाइक? कुछ इस पे व्यू या मतलब अभी चल रहा है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल का मतलब हर क्वार्टर में यही आता है अपडेट कि अभी होने वाला है। हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। तो जब तक प्रोजेक्ट मतलब ये जो नोएडा मेट्रो का है वो तो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली अपने मतलब 3 महीने ही हुए हैं, ये तो जल्दी हो जाना चाहिए। पर अभी चूंकि जो हरियाणा गवर्नमेंट जो गुड़गांव का जो ये प्रोजेक्ट है अब इतना टाइम हो चुका है, तो इसमें गवर्नमेंट जो भी एश्योरेंस दे रही है उसके ऊपर भी मतलब कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता जब तक आ नहीं जाए। लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी ये पक्का कर रही है कि इस साल में ये आपको प्रोजेक्ट मतलब बिफोर दिसंबर ये प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा। ओके। और इसका सर आपका कॉस्टिंग वगैरह भी चेंज हो गया होगा? कॉस्टिंग प्लस माइनस थोड़ा तो होता है। देखिए उसमें एस्केलेशन के इफेक्ट्स आएंगे, जो एस्केलेशन अपने को मिलेगा और जो अपने को लगेगा अब वो टाइम पर ही देखना होगा। हम लोग ये इसमें प्रोजेक्ट में क्या है कि जो मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इनिशियल स्टेज में अपना एक प्रोजेक्ट पे अपना वर्क चल रहा है, 2 ये प्रोजेक्ट आए हैं, तो प्रॉफिट से ज़्यादा हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन को टारगेट कर रहे हैं कि ठीक है प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम भी रहेगा तब भी हम इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे और इसी अपनी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट पे अपने फोकस करेंगे। Got it. Just last question. So sir, अभी how is the competition intensity अभी road projects में? जैसे we got lot of projects in particularly in February March, तो अभी what is the intensity like? अभी just थोड़ा उस पे व्यू दे देंगे तो। कंपटीशन तो पिछले साल तो काफी रहा। उसकी वजह एक तो ये थी गवर्नमेंट ने जो कोविड के जो रिलीफ दिए हैं उनको एक्सटेंडेड करती रही है। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट ईपीसी के हैं, जैसे ईपीसी में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है और हैम में भी उसका रिफ्लेक्ट अल्टीमेटली मतलब है तो उसी का एक्सटेंडेड पार्ट, तो वहां भी वो रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में हम इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं क्योंकि जिस तरह से लोगों ने एग्रेसिव तरीके से काम लिए वहाँ कुछ कंपनीज के पास भी चैलेंज आने वाला है। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी जिनका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने उनको कैंसिल करना चालू किया है और आने वाले टाइम में ये इसकी अपॉर्चुनिटी के तौर पे वापस ये प्रोजेक्ट्स आएंगे। और अभी एज ऑन नाउ अभी अपन बात करें थोड़ा कंपटीशन है, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा मतलब मेरे को समय नजर आता है। और जिस तरह से फाइनेंशियली अभी पिछले सालों में आप देखें जिस तरह से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रही मार्केट में, उसका इफेक्ट हाईवे पे भी रहा। लेकिन एज गवर्नमेंट थोड़ी लिक्विडिटी की पोजीशन जो टाइट कर रही है, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, हमारे को अपनी पोजीशन लगता है हमको अच्छे मिलेगा मतलब आने वाले समय में। Sure sir, I'll come back in the queue for more questions. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Ashish Shah with Centrum Broking. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. सर मैं पूछ रहा था कि इनविट में जो हम प्लान कर रहे हैं तो इनिशियल राउंड में हम कितने एसेट्स ट्रांसफर करेंगे और इससे कितना इक्विटी मोनेटाइज होके जीआर के पास लौट जाएगा? Yeah, so I think I'll take your this question. जी सर। में as of now, as Ajendra sir also mentioned कि 7 अपने पास में हेम प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल है, राइट, एंड 7 में से एक स्टेट का है
that one is state PWD, that is Assam government, 6 are NHI HEM, right? So अपना target is to actually flip all the asset, all the operational asset, as when that those projects are completed. अभी target तो वैसे ही है. थोड़ा call, because as the situations evolve, तो अपने को उस हिसाब से लेना पड़ेगा कि maybe we make probably we can start with 5 projects, 4 projects, or even 6 projects altogether. State को हम लोग अभी इन्विट के बाहर रखने का सोच रहे हैं, because that is a different ball game altogether. वो एक अलग ही issue है state वाला. But plan यही है कि as and when जो भी project जैसे जैसे complete होता जाएगा, we'll be setting it to InvIT platform. Maybe we can start with 6 initially also. और जो equity जो अभी अपना लगा हुआ है 1300 करोड़, उसमें equity वो on that 6 account 6 operational projects, उसमें तो करीब 900 का होगा, 900 और around 1000 करोड़ का equity लगा होगा. Idea is to create the platform initially. अभी हम लोग, because InvIT में there is a regulation which says that debt cannot be more than 49% of the EV or 50% of the EV. तो उसमें as on date हमारा project में debt तो is more than 50% of the EV. तो अपने को going forward we have to come down and we have to curtail the debt. कम लेके आएंगे तो probably whatever equity or whatever amount that would be raised at InvIT level will be utilized for repayment of debt initially, and then फिर अपने eventually we can raise the debt up to 70% once that InvIT receives the AAA status और एक कुछ है 6 distribution is completed. तो उस केस में फिर उस केस में वापस से हम लोग debt raise करके, and probably that time when we'll be raising the debt, that would be utilized for releasing my equity. तो वो एक structure बनेगा उसमें. तो it's very difficult to say कि आज की date में I don't believe that initially when we'll be shifting to this 6 HEM asset I'll be getting any equity. मेरा equity निकल जाएगा, balance sheet से निकल जाएगा, वो सब कुछ होगा, but I'll not be getting any cash. That's how I think. But going forward, it will be a vehicle available with me कि हम लोग जब होगा when as and when project will be completed, हम लोग transfer करेंगे, equity release कर लेंगे. Sure. So secondly, coming to the T&D, so एक project हमने लिया है. Now in this year, what kind of opportunities we have in mind? Where we have bidding or anything that you can indicate? इस T&D में काफी अपॉर्चुनिटीज है. अभी पिछले कुछ सालों से ये मार्केट थोड़ा सा डाउन था, लेकिन अभी जिस तरह से पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ी है और पावर की जनरेशन कैपेसिटी में चेंज हुआ है. बेसिकली पहले क्या था कि आपके पास में केवल थर्मल और हाइड्रो थे. अभी गवर्नमेंट ने टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जब फोकस किया है तो पावर सेंटर चेंज हो गए. थर्मल की जगह आपके सोलर और हाइड्रो आ रहे हैं. तो पावर इस लाइंस की काफी बड़ा स्कोप रहेगा और काफी प्रोजेक्ट लग रहे हैं और हम लोग इसमें फुल एफिशिएंसी के साथ में काम करेंगे. करीब 15,000 करोड़ के काम तो लग चुके हैं अभी. मतलब आप कह रहे हो कि इसका टेंडरिंग शुरू हो गया? बिल्कुल. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, if you would like to ask a question, then please press star 1 on your telephone keypad. Our next question is from the line of Faisal Hawa with HG Hawa and Company. Please go ahead. ये आगे के सालों में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स में आपको क्या लग रहा है, मतलब कि उनके पास इतने फंड्स या इतना अर्जेंसी रहेगी कुछ ऑर्डर्स रिलीज करने के लिए, और अगर आप कोई फोकस करें तो किन स्टेटों में फोकस कर रहे हैं? एंड दूसरी बात कि ये जो सीमेंट और स्टील के प्राइसेस हैं जो बढ़ चुके हैं, तो इसमें आगे जाके आपको ये Q1 में क्या लगता है कि अपना कितना इसमें एबिटा पे फर्क आएगा? नहीं, जहाँ तक देखिए स्टेट्स के जो प्रोजेक्ट्स है, स्टेट का जो कैपेक्स है उसके ऊपर हम फोकस कम रहते हैं. लेकिन अल्टीमेटली मार्केट का शेयर तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कुछ लोग स्टेट में काम करने का उनको जो कंफर्ट रहता है वो लोग करते हैं. लेकिन वाटर में अगर कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है तो हम लोग देखेंगे. और सीमेंट और स्टील के जैसे स्टील पे तो इन्फ्लेशन पे गवर्नमेंट ने इसको
इन्फ्लेशन को ईज करने के लिए काफी कुछ काम किया है अभी, और स्टील पे भी मतलब सीमेंट में भी इस तरह से गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन लेगी, क्योंकि सीमेंट और स्टील में देखिए एक मेजर इशू क्या आ रहा है, कोल का आ रहा है। आने वाले टाइम में अगर कोल पे कुछ गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो उसका भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो इस अपना क्या राय है, तो मतलब इसमें अपने को कोई ऑर्डर्स आगे जाके मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सेक्टर खुल सकता है नीति आयोग की तरफ से। कम वापस बताना सर, क्या व्हाट वाज योर क्वेश्चन? ग्रीन एक्सप्रेसवेज हैं, प्लस जो नए एक्सप्रेसवेज आना चाह रहे हैं, और उसमें टेंडरिंग या कोई ऑर्डरिंग तो इतनी कुछ स्टार्ट नहीं हुई है, बट उसमें लगता है कि अपने को कोई बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। देखिए इसमें जो ग्रीन एक्सप्रेसवे इसमें तो वर्किंग है ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाईवे में तो हमारा मेन फोकस एरिया है यही है, और वो चाहे मतलब उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रीन एक्सप्रेसवे है या ब्राउन एक्सप्रेसवे है। हम सभी पे भी सभी हैम प्रोजेक्ट पे पूरी एनर्जी के साथ में काम करते हैं, और उसमें निश्चित तौर पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब आने वाले टाइम में। क्वेश्चन मैं सही से पूछ नहीं पाया, मेरा क्वेश्चन था कि आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर में ये ऑर्डर्स या ये टेंडरिंग भी हो उनके तरफ से? स्टेट में कह रहे हैं ना आप? स्टेट में ऐसा है कि स्टेट में जैसे कुछ स्टेट हैं जो फाइनेंशियली थोड़े से डिसिप्लिन है, जैसे अभी अपन देखें महाराष्ट्र है, यूपी है, तो वहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी स्टेट्स में मतलब स्टेट का भी एनालाइज करना पड़ेगा कि वो फंडिंग किस तरह से है, उसके बाद भी हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर प्रोजेक्ट फाइनेंशियली प्रॉपर उनको फंडिंग किया गया है, फाइनेंशियल क्लोजर उसका हो रखा है, तभी हम इंटरेस्ट लेते हैं। अदरवाइज अगर स्टेट फंडेड है तो फिर उसमें इंटरेस्ट कम रहता है अपना। क्या मैं सही जवाब दे पाया सर आपके क्वेश्चन का? हेलो, आवाज आ रही है सर? दैट वाज सैटिस्फैक्टरी आंसर सर। Thank you. Our next question is from the line of Tina Virmani with Kotak Securities. Please go ahead. Hi sir, my question is related to T&D project. वो जो आपने अभी बताया था अभी recently जो award हुआ है, so what will be the scope of work for GR in this in terms of the subcontracting? Like, would you be doing the subcontracting for this particular project, and what kind of margin buffer you would have built in this project? Because when we compare it with the other T&D companies, सब लोग एक्चुअली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं एज पर एज मार्जिन आर कंसर्न एंड एज पर एज स्टील प्राइसेस एंड कमोडिटी प्राइसेस आर कंसर्न। तो यहाँ पर कंपनी ने जीआर ने कितना मार्जिन बफर बिल्ड इन करा है सो दैट द इक्वेशन डजंट गेट स्क्यूड टू मच टुवर्ड्स लोअर मार्जिन, एंड व्हाट आर द टाइमलाइंस फॉर दिस प्रोजेक्ट? सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा डिटेल अगर दे सके तो अच्छा रहेगा सर। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी में, और जहाँ तक सवाल है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, तो ये मिक्स लेवल पे रहेगा। कुछ लोग कुछ पोर्शन इसका सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे और कुछ इन हाउस भी करेंगे। हम टीम बना रहे हैं इसके लिए, काफ़ी टीम बन चुकी है और टीम इस पर स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है मार्जिन का, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा मार्जिन टाइट तो रहेगा ही, क्योंकि प्रोजेक्ट एक तो प्रोजेक्ट भी छोटा है और कंपनी का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो थोड़ी कॉस्ट हम ऐसा मान के चलते हैं कि लर्निंग कॉस्ट भी होती है, उस हिसाब से थोड़े मार्जिन कम रहेंगे। लेकिन हम लोग इसको टाइम पीरियड इसका 2 साल है और इसको टाइम पीरियड में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। 18 मंथ्स है, सॉरी 18 मंथ्स है, और इसको पूरा टाइम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस पे वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर? क्या मैडम? इसमें यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट? हाँ, अभी आज ही साइन हुआ है। जो एसपीवी इसमें टीएनडी में एसपीवी गवर्नमेंट बनाती है और वही हमको हैंड ओवर करती है, वो आज हमको एसपीवी हैंड ओवर हो गई। ओके ओके, बट will the margins be similar to what other T&D companies were making right now, or maybe a little more than that? थोड़ा buffer उसमें built in करा है for the higher commodity prices, because this project was recently awarded
and at that point of time commodity prices were already higher. So उस हिसाब से कुछ buffer build in करके रखा है या थोड़ा सा the competition was higher in this particular project? Buffer रहता है madam. So buffer is there, but then point is what. So while we started bidding into T&D business, so we have evaluated कि क्या type का scope and what kind of margin we can expect going forward. This was being initial project, right? So we have to build the qualification also. So उसमें हम लोग को मतलब that margin is not the major criteria for winning first project. अभी what peers or other players are getting margin, that is something different. क्योंकि unless until we enter into the same business, probably we not be guided by what others, right? What other players are having that kind of margin in their hands probably while executing those projects. क्योंकि that is even visible into road sector also, because road sector में हम लोग जो अलग level का margin थे या अभी भी है, but दूसरों के अलग है. So unless until you are exactly executing into those projects, unless until you are on ground, probably you not be able to, or we should not be guided by that margin, what other player getting margin, right? So अभी हम लोग, our strategy is to execute first project and we feel what kind of margin is available to us or what kind of margin can be made, right? And going forward, then accordingly we'll be bidding. अगर अपने को लगता है कि एक reasonable margin is not available there, probably we'll come out of that this business also. Right. And sir, one data point is needed. What will be your mix of revenues in between EPC and HAM for FY22 if you have it available handy? Yeah, it's a 70. It's more than 75%. I would say more than 75% is EPC and 25% is HAM. For the full year. For the full year. And this would be higher on the HAM side during quarter four. Pending, yeah, no. This is the same range. On quarter four also, in quarter four is around again 75% is EPC and 25% is HAM. Or I would say 73% is EPC. Okay. But this will change more in favor of HAM now that you already have. Recently, my pending order book is 77% or 76% is HAM. Yeah, right. Okay, sir. Got it. That's it from my side. Thank you. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Jiten Rushi with Axis Capital. Please go ahead. Good afternoon, sir. Congratulations on good set of numbers. Sir, my first question is on the revenue contribution from the newer projects. So you received the appointed date for HAM projects in Q4. So what kind of revenue run rate we can expect from these projects in FY23? See, generally the projects, we started in last quarter, right? And the projects were supposed to be completed in 2.5 years. So on fair basis, probably my revenue should be in the range of 40% from those projects in the current year. And sir, on the Aligarh Kanpur project, so this project should get over in FY23. Are we targeting the completion in FY23? Yes, very much. And sir, if at all we are able to get appointed dates for the new HAM projects in end of December, what kind of revenue we can expect from these projects we can in FY23, and then obviously in FY24, as you said, we can see 40% plus of execution, but probably in FY23, what can be the contribution from these projects? Depending on that, how we are getting the appointed date declared, right? It may be in the range of 10%, I would say. Okay. And sir, when can we start this power transmission project? I am assuming it is a 400 crore EPC. The order backlog in the EPC is 400 crore from this project. Yeah, it's not 400 crores. It's around 350 or 370 crores, right? That is the EPC value. And today only we have signed the agreement with the government, right? Right. So it's handed over to we can start the project. Yeah. Henceforth, it is already. So from today itself, it started. 18 months from today. Right.
Okay. And sir, can you just give me the retention money number for March? Retention money number, so I'm not having handy right now. So maybe. No. And sir, on the metro, that Noida project, you said that we can start the work in next couple of months, right, sir? Yeah. And sir, just last question from my side on the EBITDA margin front. As you said, your core EBITDA margin could be in the range of 16 to 17%. Sir, we have finished many projects in Q3 and Q4. So any bonus we are expecting from these projects in the coming quarters? Claims, Yeah. any rough number? Number, see, doesn't matter. For reason being, bonus as and when received is accounted by us, right? So, and we don't even target. So yeah, of course, that is for sure that we'll be receiving the bonus in next 1 or 2 quarters, probably both from EPC or even from, HEM. But yeah, what I believe is number is irrelevant because that should not be my target. Got it. And sir, on the new, as you said, we are diversifying into newer segments, so we can see some margin dilution from these segments going forward. So are we expected to maintain the similar margin for FY24, or we can see a margin dilution to 15%, something like that in FY24 on a blended basis? It's very difficult to say about 24, but yeah, of course, because as we would be diversifying, probably our strategy is to start, is to have a low start, so that it should not be that much, margin effect would not be that much in terms of margin. But the idea is to complete the project, build the qualification, right? And what I believe is going forward, in last 1.5 years, we have seen a big amount of competition, which I believe that will not be there going forward in next 1 or 2 years of time. And if there is no competition, probably whatever projects or whichever sector will be diversifying will not be having that kind of, we can always expect some kind of margin, right? So that depends actually. It's very difficult to say, to project the margin for 24 right now. Got it. So that's it from my side. Thank you and all the best for the new financial year. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Shravan Shah with Dolat Capital. Please go ahead. Sir, just a clarification needed. This T&D, Power T&D project, 370 crore EPC value you said, and you also mentioned that एक बार हमको experience मिले उसके बाद में हम लोग देखेंगे margin अगर हमको अच्छा मिलता है तो. So is it fair to assume that till next 18 months we will not bid the Power T&D projects? No, it's not like that. Because see, as of now, whatever team so far we have built, right, and whatever activity we have done, we have got good amount of experience, right? What kind of cost? See, before bidding into this particular project, we were just having the estimate of our cost. So these would be the costs, and now what we can see is that those cost numbers are, getting crystallized, right? So my point is that is the one thing left is the only execution. So that may also affect my margin, but then idea is that we are getting comfort as we are progressing in this particular business, we are getting comfort. So now probably we would have set up our mind in terms of what kind of margin we should expect from this kind of business, and going forward, so we will continue our bidding, and if we found that okay, there's not that kind of margin what we have, what probably we have set up in our mind is that we are not getting that kind of margin, probably we'll come out of that business. Otherwise, we'll be bidding. Right? नहीं सर, तो वही है ना कि अगर आप एक प्रोजेक्ट 6 महीना 1 साल तक करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा मार्जिन. और लेट्स से कि so सिंपल क्वेश्चन इज इन नेक्स्ट 6 months आर वी लाइकली टू बीट. तो अगर और प्रोजेक्ट ले लेंगे लेट्स से 1000-2000 करोड़ के, और फिर पता चलेगा सब में अपने को मार्जिन नहीं बन रहा है और फिर हमको एग्जिट करना है, सो उससे बेटर नहीं है कि पहले ये प्रोजेक्ट 6 महीना 1 साल कंप्लीट करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, देन बीट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स. नहीं वो भी अच्छा है,
but it is too late rather, I would say, because क्या है कि see, when I have asked for a quotation from the vendor in this particular business, I was not having any order in my hand, right? So no vendor was even serious while giving me quotation, right? Now, because I have some order in my hand, so vendors are also looking at me in serious manner, right? So they are giving me a real number, I would say. तो अभी मेरे को समझ में आता ना what is the cost, right? And so far what I have gained is that I can estimate rightly on cost. Yeah, of course there may be variation on account of execution. So my point is कि अभी variance जो होना है ना, that cannot be so big, I would say. Maybe 1 or 2% here and there, right? So अभी तो मेरे को समझ में आ गया. Now I should always use whatever I have learned, right, so far in this particular sector. तो अभी मेरे को bidding में काम आएगा ना. It is going to help me a great way. Okay. And इसमें सर अपना इक्विटी कितना लगेगा ये प्रोजेक्ट में? Generally it is 25% equity contribution that is being asked by. तो 100 करोड़ का आप मान के चलो. Okay. Got it, sir. And then डेट लेवल सर स्टैंडअलोन पे जो अभी मोटा मोटी 1100 करोड़ है, तो वो कुछ इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि आपने बोला कि मोनेटाइजेशन से इनमिट में से अपने को कुछ पैसा मिलेगा नहीं इन टर्म्स ऑफ द कैश इनफ्लो एटलीस्ट फॉर 1 साल 2 साल तो नहीं है, बाद में जाके होएगा जब डेट का आपने बोला कि इंक्रीज जब करेंगे डेट इनमिट पे और फिर रीपे करेंगे अपना इक्विटी. तो स्टैंडअलोन पे डेट जो अभी 1100 करोड़ है वो नंबर इंक्रीज होना चालू होएगा अभी? नहीं, आई डोंट थिंक कि वो नंबर इंक्रीज होना चाहिए बिकॉज सी गोइंग फॉरवर्ड जनरली इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है, लेकिन वी हैव सीन इन हैम प्रोजेक्ट्स दैट कि वी वर एबल टू कंप्लीट हैम प्रोजेक्ट्स विदाउट टेकिंग एनी, राइट. थोड़ा इन्फ्लेशन है, मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आता है. टू दैट एक्सटेंट माई डेट नंबर कैन वेरी, but we are very much comfortable while executing any HAM, right? तो HAM प्रोजेक्ट के लिए मेरे को चैलेंज नहीं है. मोर ऑन आई वुड से अब जैसे इसमें छोटा प्रोजेक्ट एक छोटा स्मॉल कंट्रीब्यूशन आल्सो कमिंग फ्रॉम T&D सेक्टर पावर ट्रांसमिशन का, तो उसमें थोड़ा बहुत आता है, राइट. EPC में चाहिए नहीं, HAM में चाहिए नहीं, तो कैपेक्स बहुत बड़ा प्लान है नहीं, राइट. सो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी मेजर डिफरेंस इन that number. Okay, sir. Thank you and all the best. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Rita Tahil-Ramani with Invesco Mutual Fund. Please go ahead. Hello sir, thank you. Just one question. Actually मुझे थोड़ा confusion हुआ है. Can you please help me with the equity plus loans अब तक और कितना इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना पेंडिंग है? Sorry. So 1300 crore is invested so far in HAM projects, right? And करीब 2100 crore is additional equity commitment from our side on these projects. And इसका ये including the new HAM projects है, right? Including new HAM, right? Including new HAM, including that transmission, power transmission. So. और ब्रॉडली इसका स्केड्यूल आपने कहा कि 700 करोड़ ईच ईयर होगा. जनरली बिकॉज ये 3 साल में कंप्लीट होना है, तो मे भी कोई साल में 800 हो जाएगा, कोई साल में 600 हो जाएगा, बट जनरली दैट वुड बी द रेंज. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू, गुड लक. थैंक यू मैडम. Thank you. Our next question is from the line of Tina Virmani from Kotak Securities. Please go ahead. Sir, thank you for the follow-up. I might have missed out on this clarification. There is an increase in other current assets which we have seen for FY22 as compared to FY21. So is there any component of unbilled revenues or a higher proportion of unbilled revenues, or what is it due to? Yes, so there is higher proportion of unbilled revenue. Unbilled revenue is probably around, on account of unbilled revenue, probably my unbilled revenue has increased by around 320 crores in the current year, right? And the reason was that in last financial year, we have been given this opportunity by NHI that we could raise the bill
by 20 or 22nd of March, and we could, convert our whatever work done for the month of March until 20 or 22nd of March in the debtors, right? So you'll find that last year debtor was high, and in fact we have received the payment also. So when we raised the bill on 22nd of March, we could receive we could encase those debtors before end of March. This year that facility was not available with us, and hence the unbilled revenue has increased, right? Okay. Got it, sir. That's it. That's it from my side. Thank you. Thank you. Thank you. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. थैंक यू सभी को, ये जो इन्वेस्टमेंट कॉल पे सभी आने वाले को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कंपनी इसी तरह से पूरे एफर्ट के साथ में काम करती रहेगी, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों का कंपनी पे ट्रस्ट बना रहेगा और सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you. On behalf of HDFC Securities, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.